बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are in the best of your health by the grace of Allah Almighty. Welcome to the class P9th. Today we are going to start unit number 2 of physics because we have already studied unit number 1 in class 8. So let's move to our today's lesson, unit number 2, kinematics. In this unit we will discuss about the types of motion, scalar and vector quantities, the terms associated with motion, graphical analysis of motion, linear motion and equations of motion. Let's start our lesson. What is kinematics? Dear students, whenever we talk about the movement of objects, the first thing to be considered is its kinematics. Kinematics is the study of motion of an object without discussing the cause of motion. Dear students, highlight this definition from page number 28. We see various things around us. Some of them are at rest while some are in motion. Let's see कि ऑब्जेक्ट कब रेस्ट की पोजीशन में होंगे और कब मोशन की पोजीशन में. Dear students, mark the definition of rest from page number 29. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. For example, a passenger in a moving bus with respect to other passengers inside the bus. एक बस में बैठा मुसाफिर बस में मौजूद दूसरे तमाम मुसाफिरों और चीजों के लिहाज से रेस्ट की पोजीशन में है, हालांकि बस मूव कर रही है. Let's see, when the object is said to be in motion, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. For example, a passenger sitting in a moving bus with respect to an observer outside the bus. बस स्टेशन पर खड़े लोगों के लिहाज से बस के अंदर मौजूद तमाम चीजें और मुसाफिर मोशन में हैं. So we can say that the state of rest or motion of a body is relative to each other. One body will decide that the other is moving or not. Our next topic is types of motion. अगर हम अपने इर्द गिर्द तमाम चीज़ों पर गौर करें तो हर चीज़ मूव कर रही है, लेकिन हर चीज़ की मूवमेंट दूसरे से मुख्तलिफ है. कुछ चीज़ें स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, कुछ चीज़ें सर्कुलर पाथ में और कुछ चीज़ें रैंडम मूव करती हैं. लिहाजा हम तमाम चीज़ों की मोशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड इज रोटेटरी मोशन and third is vibratory motion. In translational motion, a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. Translational motion में एक ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से मूव कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेट, कर्व या zigzag हो, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट बिना रोटेट किए मूव करना चाहिए. For example, a car moving in a straight line, an aeroplane moving straight, or the motion of riders in a Ferris wheel. Dear students, mark the answer of exercise question 2.6 from page number 30. The question is, why do riders moving in a Ferris wheel possess translatory motion but not rotatory motion? Its answer is, riders moving in a Ferris wheel are in translational motion because their motion is in a circle without rotation. फेरिस व्हील में मौजूद राइडर्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, इसलिए हम राइडर्स की मूवमेंट को ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करते हैं. The next is types of translatory motion. Dear students, there are 3 types of translatory motion: linear motion, circular motion and random motion. The definition of linear motion is given on page number 30. The motion of an object in straight line is known as linear motion. हर वो ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा हम उसकी मोशन को लीनियर मोशन कहेंगे. For example, the objects falling vertically downward. The next is circular motion. The motion of an object in a circular path is known as circulatory motion. हर वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा हम उसकी मूवमेंट को सर्कुलेटरी मोशन बोलेंगे.
For example, the motion of Earth around the Sun or a toy train moving along a circular track. Dear students, we all have noticed the type of motion of insects and birds. Their movements are irregular. This type of movement is called random motion. The disordered or irregular motion of an object is called random motion. Dear students, mark an additional question from page number 31. What is Brownian motion? Its answer is random motion of gas molecules is called Brownian motion. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज नंबर 1 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.3 पार्ट 1 और 2.6 को कवर किया है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर योर होम टास्क. You have to learn the whole lecture from page number 28 till 31, specifically the definitions with their examples. Dear students, ये definitions आपने अच्छे तरीके से learn करनी है. नोटबुक पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. Dear students, we will continue this topic in next lesson. Till that, stay tuned with us. Jazakallah. Take care of yourself.